ओके, वेलकम बैक। अगले 2 लेसन्स में हमने मज़ीद मैक्रो के बारे में डिस्कशन करनी है। इन लेसन 3 वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू save a file that has macros. We call this file as macro enabled file, and the file extension is XLAM, macro enabled. So if you save a file without this extension, any macro in that file will be lost. It is important to note that if we have macros in a file, it should be saved as a macro enabled file. So how do we save it? We go to file and then we go to save as, choose location on our computer, and here in the Excel workbook expand that menu, and the second option appears as a Excel macro enabled workbook. So it has an extension of XLSM, and now the file extension is XLSM. I'll give it a proper name, lecture macros. And now this file have saved all the macro. So let me correct it here, XLSM. The file extension is XLSM. Now if we close this file and open it, it will have all the macros in it. अगर हमने इसको XLSM extension के साथ सेव नहीं किया, so any macro in this file will be lost, और next time आप इसको जब ओपन करेंगे तो इसमें मैक्रो नहीं होंगे. तो ये इम्पॉर्टेंट लेसन है, कीप दिस इन माइंड. लेसन 4 में हमने कुछ यूज़फुल कैलकुलेशन करनी है मैक्रो के साथ. तो हम क्या करते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास वी हैव प्लेयर्स एंड ईच वन ऑफ देम हैव 4 अटेम्प्ट्स, और हर दफ़ा हमने उन 4 वैल्यूज़ की एवरेज फाइंड करनी है. तो इसका आसान तरीका जो मैनुअल मेथड है वो ये है कि आप इक्वल टाइप करते हैं और एवरेज लिखते हैं, एंड देन सेलेक्ट द रेंज अप टू 4th one, and that's it. So this is what we normally do. अब यही काम हमने मैक्रो के अंदर करना है, so it will be saved as part of the macro. But keep in mind it's a relative macro. इसका मतलब यह है कि हम इसको अगर यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं तो इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं. It should be a relative macro, and we have already enabled relative macro. It's gray. Okay, तो हमने वो प्रिंसिपल फॉलो करने हैं. प्रिंसिपल नंबर 1, अगर आपको लेसन 1 से याद हो कि एक्टिव सेल कहाँ पे होना चाहिए. अब यहाँ पे एक्टिव सेल हमारा यहाँ पे है, क्योंकि फाइंड एवरेज ऑफ 4 सेल्स दैट आर अबव द करंट सेल. तो इस सेल से ऊपर 4 सेल्स का हमने एवरेज फाइंड करना है. सो दिस शुड बी आवर एक्टिव सेल. सेकेंड, मेक श्योर इट्स अ रिलेटिव. तो ऑलरेडी ये रिलेटिव है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके, नाउ इट्स टाइम टू रिकॉर्ड द मैक्रो. डेवलपर टैब पे जाके गो टू मैक्रो, and I give it some appropriate name, find macro. And it is not necessary that you give shortcut key to each macros. You can leave it blank, so I'm not assigning any shortcut key. Okay, and now equal to, just like normal, we type the average formula, select these 4 cells, and
Here we go, we have the average. Now stop the recording, and if we apply the macro here, since it's a relative macro, it was recorded here, but it can be applied anywhere. So let's go to macro. Our third macro is find, sorry, I should have given it a name of find average, but now it is find macro. It doesn't matter, but the name is misleading. So I'll select find macro and click run. So if we see it, it has applied the average formula to the given cell. And you might wonder, what if we apply it here? It will apply the average formula and find average of these cells. Since there is no value in these cells, so we'll get some empty values here. So the formula can be applied anywhere, but you have to think that whether it is useful to apply here or not. So let's say, just for curiosity, we apply the macro here. So run, and it gives us the divided by 0 error, because there are no values. If we put values, it will have the average of these 4 cells. So let's practice on these lessons, lesson 3 and 4, and then we'll go to lesson 5.